सपोज हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x over 2x plus 1, and we are interested in finding the asymptote of this rational function. Clearly, degree of p of x is greater than degree of q of x. This means r of x can be written in this form: 1 over 2x minus 1 plus 1 over 2x plus 1. If we keep in mind the theoretical background that we have discussed, then 1 over 2x minus 1 is our f of x, 1 is our g of x, and 2x plus 1 is our q of x. Mean f of x is our quotient, g of x, which is equal to 1 there, is our remainder, and q of x, which is 2x plus 1, is our divisor. ये हमारा डिवाइजर होगा. Definitely 1 over 2x plus 1 will be approaches to 0 as x approaches to plus minus infinity, because degree of g of x is less than degree of q of x. Definitely this will approach to 0 whenever x approaches to plus minus infinity. Then r of x will be approaches to f of x, and f of x is equal to 1 over 2x minus 1. This is will be our slant asymptote. Whenever x approaches to plus minus infinity and 1 over 2x plus 1 approaches to 0. So then this curve f of x, which is a straight line, will show the asymptotic behavior of the curve r of x. इसको मोर क्लियरली ज़्यादा हम देखते हैं ग्राफ से कि ग्राफ के अंदर ये जो हमारे पास स्लांट लाइन है ये किस तरह शो हो रही है. इसे कर्व की फॉर्म में देख लेते हैं. ग्राफ में अगर आप देखें ये वो हमारे पास स्लांट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वाली, ये हमारी होगी स्लांट एसिम्प्टोट. और कर्व जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर जो है वो हमें देगा x इज इक्वल टू -1/2 के ऊपर, यानी यहाँ के ऊपर, यहाँ पे. तो ये लाइन है x इज इक्वल टू -1/2 होगा इस पॉइंट के ऊपर हमारा. तो ये लाइन हमारे पास स्लांट एसिम्प्टोट आ गई, ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया एट x इक्वल टू -1/2 के ऊपर. अब हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे.